Okay. Okay. So good evening, students. Today we'll be discussing the CBSE standard maths or sample paper to আজি আমি discuss কৰিম, but not লিখিম কেনেকৈ হৈ যাব ঠিক আছে ঠিক আছে না Okay. So good evening, students. আজি আমি CBSE কাৰণে যোনখন standard maths standard কাৰণে sample paper, not all, but the lengthier questions I will discuss today. The section D and section E questions I will discuss. Okay. ঠিক আছে. See now the exam to usor ahi pale. The exam is nearby only. 17 Feb, the very first exam that you are going to give is maths only. Yes. Now, whoever is watching, I want you to comment whether you have maths basic or standard. Tomorrow maths basic ase ne standard ase. Today I am discussing for the standard part. In the next video I will be discussing for the basic also. But today I will not be discussing the entire sample question paper. Only the lengthier ones. This year's official sample paper I will discuss. Hi sir, gulab jamun question. Gulab jamun wala question. Surface area wala question. The surface area question of gulab jamun. Standard. The surface area, that question zonto tomar gulab jamun ase, that question more or less doesn't come much in the exam. ঠিক আছে গোলাপ জামুনৰ যোনটো কোৱেশ্চন আছে বুকত বহুত লেন্দি কোৱেশ্চন হয় সো হেতু ইমানটা পৰীক্ষাত নাহে আৰু আহিলেও এজ আ কেছ ষ্টাডি আৰ চান্স বেছি আছে that gulab jamun question that you are saying, there are high chances of coming as a case study. ঠিক আছে I will do, if we have time I will do that question. ঠিক আছে so today I will be discussing the section D, this year's official sample paper, section D, the lengthier part, the 5-mark questions I will discuss, and the competency based question, that is your case studies. ঠিক আছে I will be discussing the lengthier questions, the 5-mark questions, and the case studies. ঠিক আছে so let's begin. Okay, so this is the very first question from section D, which had 5 marks. This question carried 5 marks. Okay, now read the question properly. So this okay, so this question carried 5 marks and this was in section. So this is the very first question of section D. Ki diya ase? Let's read the question. This year ki diya ase, train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers. For a distance, the distance given to you is 63 kilometers, then travels at a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 kilometers per hour, more than its original speed. ঠিক আছে if it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? See, whatever you are told to find, that itself will consider as x. আমাক যি ওলাব দিছে that only
we'll consider as x. ঠিক আছে, so we consider ki let the original average speed equals to x kilometer per hour. হয় না, আমি original average speed to x kilometer per hour ধৰি ললো. Okay, ঠিক আছে. Now after that we'll apply the condition given in the question. Question ki diya ase? It is given that suppose a train travels at a certain average speed for a distance of x for a distance of 63 km per hour. Suppose a train is going say from A to B. Suppose it is going. Suppose I am saying, suppose you are going say from Guwahati to say Nagaon. Say Guwahati to Nagaon you are going. Okay, say Guwahati to Nagaon, it's around 63 kilometers. Just for example, okay, 63 kilometers you are going at a certain average speed. The average speed that we have considered is x kilometer per hour. Right? Guwahati to Nagaon, it is 63 kilometers. Okay, then it is said, then it travels at a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 kilometer more than its original average speed. The original average speed was x. হয় না, তার নেক্সট পার্টটোত মানে ধৰা নগাঁৱৰ পৰা স্যাৰ তেজপুৰ, নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ ধৰা সে নগাঁও টু তেজপুৰ is say 72 kilometers, just for example. And কি কোৱা হৈছে, it travels 6 kilometer more than its original average speed. হয় না, মানে আমাৰ original average speed আছিলে x, তাতকে 6 কিলোমিটাৰ বেছি জুৰে গৈছে, মানে x plus 6 কিলোমিটাৰ per hour হৈছে, মানে x plus 6 কিলোমিটাৰ per hour বেছি জুৰে গৈছে. Clear on that part? ঠিক আছে. So overall this is a summary of the journey. This here is a total summary of the journey. Now we know that আমি জানো যে speed is equals to distance by time. तो हे हिसाबे time is equals to distance by speed. হয় না, time equals to distance by speed. কোৱা হৈছে যে to travel এই গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈকে গোটেই জাৰ্নিটো ট্ৰাভেল কৰিবলৈ লাগি গ'ল 3 ঘণ্টা. ঠিক আছে. Now we have to apply the conditions to our question. hello okay, আমি এতিয়া কোৱেশ্চনটোত আমাক যোনটো কন্ডিশন দিয়া হৈছে সেই কন্ডিশনটো হিচাপত আমি এতিয়া বনাব লাগিব, ইকুৱেশ্যন বিল্ড কৰিব লাগিব. হয়নে, ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, that it takes 3 hours to complete. ঠিক আছে. okay, এতিয়া চোৱা, now we'll apply the condition to our question. ঠিক আছে. if you see ইয়াতে 63 kilometer you are traveling at a speed of x kilometer per hour. হয় না, so এইখিনি ট্রাভেল কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব, good evening to all the students who are joining live, good evening. okay, এইখিনি এই 63 কিলোমিটাৰ ট্রাভেল কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব, 40 to 48. তোমাৰটো answer হ'ল answer will find might be correct, we are not reaching there. A 63 kilometer travel কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব, if you are traveling at a speed of x kilometer per hour, since time equals to distance by speed, distance is 63, time you are taking x, so এইখিনি travel কৰিবলৈ লাগিব 63 by x. okay, this here is your time to go from Guwahati to Nagaon. এইখিনি ট্রাভেল কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব, here your distance is 72 and you are traveling at a speed of x plus 6 kilometer per hour. Fine. And overall this and this, overall it takes 3 hours. overall আমি লগাই আছো 3 ঘণ্টা.
হয়নে মানে এইখিনিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও যাবলৈ 63/x সময় লাগিছিলে this here is your t1 and this here is your t2 and t1 plus t2 gives you 3 hours ঠিক আছে now we'll be solving this now we'll apply the conditions to our question ঠিক আছে okay see now according to the question since 63 by x by 72 by x plus 6 is equals to 3 hours ঠিক আছে বুঝিছো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ is it clear till here okay ঠিক আছে now we have to solve this what was our initial we were going from point A to point B at x kilometer per hour this was 63 kilometers so the time taken was 63 by x then we went from B to C at a speed of x plus 6 kilometer per hour which was 72 kilometers so the time taken to go from B to C is 72 by x plus 6 since time is distance by speed now you have to solve this take the LCM lole to x or x plus 6 uport cross multiply hobo 63 into x plus 6 plus 72x equals to 3 and take this that side so this becomes 63x plus what is 63 into 6 yeah answer might be 42 and 48 we are going there slowly we are going there okay so this is going to be 63 this is 378 plus 72x then this will get multiplied here this will be 3x square plus 3 into x into 6 let me do it properly only this is 3 this will get multiplied here so this will be x into x plus 6 fine so this is 63x this is 72x sorry 63x plus 72x how much you get can you now solve it and tell me the answer here if you do this here to the add kora yate paba 135x plus 378 this if you do this will be 3x square plus 3 into this is 18x bring all the things here so 3x square plus this I will bring all the things that side so 135x will go that side so 18 minus 135 will be minus 117x minus 378 and if you see the entire thing can be divided both side by 3 if you divide both side by 3 you will get if I divide both sides by 3 I will get x square minus how much x square minus how much it will be I think 42x x square minus 39x minus 126 equals to 0 now if you factorize this if you take the middle term method this will become x square minus 42x plus 3x minus 126 equals to 0 here if you take x this will be x minus 42 then plus 3 x minus 42 equals to 0 so the factors that I have are x minus 42 and x plus 3 equals to
0. Now if I equate this to 0, so this implies, so therefore x equals to 42 or x equals to minus 3, but your x is speed, no, so x cannot be negative, so therefore x equals to 42 kilometer per hour. Yes, so it is the correct answer. Whoever said 42 is the correct answer. Sir, artificial intelligence part B class 10 please. Artificial intelligence. Okay, if you need a class, I'll look into it. Okay, if we can, we'll add classes for this. Okay, should I move on to the next question now? Should I move on to the next question now? Okay, moving on to the next question. Artificial intelligence, I will I will inform the team to have classes regarding this. Okay. Next question. Prove that the line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other side in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. What is this? What is this? This is the first part of the question. This is the first part of the question. This is nothing. Isn't it nothing but BPT? This is nothing but your BPT. Yes or no? It is a BPT. Is it BPT or the converse of BPT? Is it BPT or the converse of BPT? Hello. Give me tough questions, I solved it. Achha. Okay. Tell me the answer on this. Tell me the answer of this part. The second part. The first part is the BPT. The first part. Here is the BPT. The proof of BPT. Okay. This is section D question. These are section D questions. Okay. So prove. The proof part is in the book only. Can you do the second part? Quickly do the second part and tell me the answer. This will act as a practice for you only. Give me tough questions. Achha. Quickly tell me the answer of this. Then I will give you a tough question. सर आप इतने हेल्दी काहे हो? अरे ये सिलेबस में नहीं है, इसका जवाब नहीं दिया जाएगा. जो लिखा है बोर्ड में उसी को करो, पर्सनल नहीं होना है. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बोलो? Since this is easy for you, I am not doing it. Okay, the second part is rather easy only. Since we have to use BPT here directly only, if we are given that in triangle PQR, prove that a line intersects the other two sides PQ and PR, or PQR at L and M. Yes, meaning
meaning you are simply given a triangle. You are simply given a triangle. Yes, you are given a triangle in which the sides we have L and M. We have L. We have triangle P, Q, R. Then I have L and M. L and M are the sides. LM parallel to QR. You are given the LM parallel to QR. If LM is parallel to QR, this means by BPT. By BPT, what can I say? What can I say by BPT? By BPT, I can say that PL by LQ equals to PM by MR. This is by BPT only. This is a direct application of BPT. What you are told to find? We are told to find the length of PM. Now PL is given to you. PL is given to you. PL is 5.7. Then PQ. PQ. You are given PQ. How will you find LQ? How will you find LQ? Because here we have LQ. And MR you are given PM by PM. PM we have to find PM. Then MR you are given as 5.5. 5.5. What is the length of LQ? Because only after finding LQ I can apply. Yes. Even if you don't find the value of LQ, still you can find. Still you can apply this. Three. X is 3. X 3 is not the correct answer. 3.3 is the correct answer. The answer is 3.3. 3 is not the correct answer. इतना भी डायरेक्ट डेसिमल में नहीं आएगा. ठीक है, तुम लोग ही बोले थे तुम इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन गलत करते हो. आंसर इज 3.3. द आंसर इज नॉट 3. आंसर इज 3.3. आया किसी का 3.3? गिव मी वन मोर. Okay, so the answer is 3.3. See, because you are given 5, PL is 5.7, PQ you are given, the value of PQ you are given as 15.2. 15.2 से 5.7 माइनस करोगे तो ये इसका वैल्यू निकलेगा. LQ का वैल्यू तुमको यहाँ पे लाना है. 15.2 minus 5.7, this will give you 5.5. This will give you not exactly 5.5, 9.5. This will give you 9.5. And if you cross multiply 5.7 by 9.5 into 5.5, this will give you the answer. Okay. ओके, तुम लोगों को टफ क्वेश्चन चाहिए तो इसको करो. टेल मी हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू डू दिस. ओके, ठीक है. तुम लोगों को हार्ड क्वेश्चन चाहिए था तो आई एम गिविंग यू अ सिंपल हार्ड क्वेश्चन. ओके, टेल मी हाउ विल यू डू दिस. इसको कैसे, ये कितने मार्क का क्वेश्चन है बोलो तो. ये टेल मी, ये कितने मार्क का क्वेश्चन है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी मार्क्स. ये कितने मार्क का क्वेश्चन है बोलो, क्या लगता है. गिव मी वन मोर क्वेश्चन. दिया तो है सामने, तो देखो दिया हुआ है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच मार्क्स. यू टेल मी दैट.
3 मार्क का है, 4 मार्क का है, कितने मार्क का है? Three marks. 3 marks. This here यहाँ पे तो ऐसे दिया हुआ है, but this is rather है MCQ क्वेश्चन. ये MCQ क्वेश्चन है, ये MCQ क्वेश्चन है, ये MCQ क्वेश्चन है. Hardly this is a 2 mark question. Hardly this is a 2 mark question. Now how to solve this? How to solve this? If you see, you are given that PT is a tangent. PT tangent है सर्कल पे, O सेंटर है, OC परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर किस पे है? AB पे है कि नहीं? नाउ AB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. AB सर्कल का कॉर्ड है, O सेंटर है, OC इज द परपेंडिकुलर, OC is a perpendicular on the chord AB. तो perpendicular drawn from the center to the chord does what? बता दिया, लेकिन 3 मार्क का है नहीं क्वेश्चन. ठीक है. You tell me what does the perpendicular from the center to the chord does? Perpendicular सेंटर से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? 90 डिग्री करता है. 90 डिग्री कौन करता है? वो नहीं पूछे. आई एम आस्किंग, सी OC इज द परपेंडिकुलर, OC इज द परपेंडिकुलर ऑन AB. लिखा हुआ है OC is perpendicular to the chord AB, and क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा है कि the perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. OC bisects AB. So उस हिसाब से तुम्हारा BC इक्वल्स टू AC हो गया. BC इक्वल्स टू AC हो गया. ये सही है. BC इक्वल्स टू AC हो गया. अभी देखो, now I will take the left hand side. ये PA into PB लेंगे. Now therefore PA into PB को देखो, PA into PB हमको राइट हैंड साइड में, अभी लेफ्ट हैंड साइड में PA और PB है, लेकिन राइट हैंड साइड में PC और AC है, which is not directly related to your left hand side. तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के टर्म्स में लिखेंगे. ठीक है. उसके लिए क्या करना होगा, इफ यू सी PA कैन बी रिटन एज PC माइनस AC. PC माइनस AC लिख सकते हैं. PA को P से लेके C तक, ये हो गया PC माइनस AC करेंगे तो PA ही तो निकलेगा. तो ये हो गया PA तुम्हारा. फिर PB को देखो, इफ यू ऑब्जर्व PB, योर PB यहां तक है. PB माइनस तुम अगर PC प्लस BC करोगे तो ये तो PB निकलेगा, है कि नहीं? If I do PC plus BC, I will get PB only. So this here is your PB, है कि नहीं? है. P से लेके C तक उसमें BC याद कर दिया तो ओवरऑल पूरा PB निकल जाएगा. अभी हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है कि AC इक्वल्स टू BC. ऑलरेडी इट इज प्रूवन ओनली. सो PC माइनस AC और PC प्लस AC, तो ये हो गया PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. डन. यही है. ये तो लिखना भी नहीं है, इट इज सिंपली एन MCQ क्वेश्चन. यहां पे तो दे दिया है प्रूफ करने को. द क्वेश्चन केम कि PA इंटू PB इक्वल्स टू ऑप्शन दे दिया था. ठीक है, कि PC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, PC वो कुछ दिया था. सो इट सिंपली एन MCQ क्वेश्चन. सही है. इज इट क्लियर? कमेंट और गाली गलौज सुनिए. ठीक है, समझ में आया? Why the figure might look tough, but the question was comparatively, solution was comparatively easier. ठीक है, तो मिल गया. एक हार्ड सवाल दे दिया, दिमाग को थोड़ा दौड़ाने के लिए हार्ड सवाल दे दिया. ठीक है. Should I move on? Should I move on to the next question, or you need a one more harder question?
करेंगे, बीच बीच में हार्डर क्वेश्चन करते रहेंगे. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस वाज आल्सो, ये भी सेक्शन डी का ही क्वेश्चन है. सेक्शन डी का ही क्वेश्चन है. ये 5 मार्क्स का आया था. 5 मार्क्स का आया था. दो ऑप्शंस दिया हुआ है. ओके, यू आर गिवन दिस और दिस. कौन सा वाला करे पहले, कौन सा वाला किया जाए पहले? Read the question, then I will come. One more. करेंगे इसको थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद लाएंगे क्वेश्चन लाएंगे. Read the question first. Read the question. ओके वाला करो, और वाला करें. एम्प्टी कौन वाला? अच्छा ठीक है, एम्प्टी कौन वाला करते पहले. एम्प्टी कौन वाला करेंगे. सी, व्हेनेवर यू आर गिवन, जब भी तुमको एग्जाम में दो ऑप्शन दिखे ना, सीबीएसई क्या करते हैं, सीबीएसई व्हाट सीबीएसई डज इज दैट whenever it gives a slightly harder question, देखो स्टैंडर्ड लियो मैथ्स का, तो इसका तो तुम रिस्क एक्सेप्ट करके ही लियो. यस, यू आर विलिंग टू गो फॉर से साइंस स्ट्रीम, या तो इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रखोगे, इसलिए तो स्टैंडर्ड लिया है, वरना बेसिक लेके भी कर सकते थे, है कि नहीं. सो व्हेनेवर बेसिक में क्या होता है, बेसिक में ऑलमोस्ट बुक का एज इट इज ही आता है, ठीक है. लेकिन स्टैंडर्ड में द क्वेश्चंस आर स्लाइटली ओनली चेंज्ड. ओके, बट व्हेनेवर सीबीएसई गिव्स अ मच हार्डर क्वेश्चन, उसमें एक और देता ही देता है, ठीक है. और वाला, अभी कौन सा वाला और इजी होगा वो तुमको पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है. यहाँ पे और वाला, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन बी वॉज मच इजियर. ऑप्शन बी वॉज मच इजियर. कैसे, ये देखो, लेट मी ड्रॉ सिंपली द फिगर. क्या दिया हुआ है, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. कोन दिया हुआ है, यू आर सिंपली गिवन ए कोन, ठीक है. यहाँ तक कोन का है, कोन ही नहीं है तो मान लो. अच्छा, अभी यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोन दिया हुआ है, ठीक है. एन एम्प्टी कोन ऑफ हाइट रेडियस, तुमको रेडियस दिया हुआ है, द रेडियस दैट इज गिवन टू यू, द रेडियस दैट इज गिवन टू यू इज 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं. रेडियस तुमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये है 3. एंड द हाइट तुमको दिया हुआ है, दिस इज द हाइट, नॉट द स्लैंट हाइट. हाइट तुमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. फिल्ड विथ आइसक्रीम सच दैट the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, empty, but a hemisphere is formed on the top. अच्छा, मतलब बात कॉर्नेटो का चल रहा है, कॉर्नेटो का होता है ना. जब तुम कॉर्नेटो खाते हो, आइसक्रीम का नीचे वाला पार्ट में आइसक्रीम होता है. नॉर्मली इफ यू तो ठेले वाले से आइसक्रीम खाओगे तो आइसक्रीम घुसा के देगा, लेकिन फिर भी नीचा वाला, द वेरी बॉटम पार्ट ऑफ द आइसक्रीम कोन रिमेन्स एम्प्टी, क्योंकि वहां तक जाता ही नहीं है कि नहीं. तो इसीलिए आइसक्रीम वाले दो, द पैक्ड आइसक्रीम दैट यू बाय फ्रॉम द शॉप, कॉर्नेटो हो या कुछ हो, नीचे वाले में चॉकलेट होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, तुम हाथ से आइसक्रीम बनाओगे कोन, तो नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये खाली रहता है, क्योंकि आइसक्रीम वहां तक घुसता ही नहीं है कि नहीं. सो इफ यू ड्रॉ ए सिंप्लीफाइड फिगर, ये अगर आइसक्रीम का कोन हुआ, अगर ऊपर अगर बटर स्कॉच आइसक्रीम खाए हो, तो ये दिस इज योर बटर स्कॉच आइसक्रीम, है कि नहीं. ये तुम्हारा कोन है, ये नीचे वाला पार्ट खाली है, ठीक है. दिस इज एम्प्टी,
क्योंकि वहां तक आइसक्रीम घुसा ही नहीं. एंड दिस इज 1/6 ऑफ व्हाट, 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन. कोन का वॉल्यूम का 1/6 ये पार्ट एम्प्टी है. यहां तक आइसक्रीम है, यहां तक पूरा तुम्हारा बटर स्कॉच वेनिला जो तुमको पसंद है, यहां तक पूरा आइसक्रीम है. तुमको बोला है कि कोन में कितना आइसक्रीम है, कोन में कितना आइसक्रीम है. ठीक है, क्वेश्चन समझा दिया. इज द क्वेश्चन क्लियर? मेरा नाम तो थंबनेल में ही है, नीलोत्पल है मेरा नाम. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को करने के लिए नाउ क्या था मेरा, आई हैड ए, मुझे था कोन, इसमें था आइसक्रीम. ठीक है, ये तुम्हारा बटर स्कॉच वाला आइसक्रीम या जो तुमको पसंद है वो वाला. बटर स्कॉच का स्पेलिंग हमको नहीं पता है. ये हो गया. रेडियस दिया था 3, हाइट दिया था कोन का हाइट दिया था 12, और दिया था इट वॉज मेंशन कि नीचे वाला पार्ट रहता है खाली, नीचे वाला पार्ट रहता है खाली, है कि नहीं? नीचे वाला पार्ट रहेगा खाली. ठीक है, पहले हमको निकालना है वॉल्यूम. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. वॉल्यूम ऑफ द कोन का कितना होगा, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? इट इज सिंपली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ सिंस द क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन कि तुमको पाई 3.14 लेना है कि 22/7 लेना है, तो तुम हमेशा 22/7 ही लो. 3.14 लेके डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करके झंझट क्यों करना है, नहीं करना है. सो 1/3 इंटू 22/7. रेडियस तुमको दिया हुआ है 3, रेडियस यू आर गिवन इज 3, 12 is your height, everything is given. 22/7 into 3 into 12. Quickly tell me the answer. कैलकुलेट करके बोलो कोन का वॉल्यूम कितना आया, कोन का वॉल्यूम कितना आया. कितना आएगा? दिस इफ यू डू, एक तो 3 कैंसिल जाएगा, है कि नहीं, बाकी तो होगा. सो दिस विल लेट मी, पाई को अगर पाई रखेंगे, इसको अगर पाई रखेंगे तो आंसर आएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब. हो गया. अभी तुमको बोला गया है कि पूरा आइसक्रीम का 1/6 एम्प्टी रहता है कि नहीं? आइसक्रीम का नीचे वाला पार्ट एम्प्टी रहता है, लेकिन 1 - 1/6 मतलब 5/6 में तो आइसक्रीम है. तुम्हारा कोन के नीचे वाला 1/6 में आइसक्रीम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला 5/6 में तो आइसक्रीम है कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होगा? दिस इज 5/6 of what? 5/6 of what? Quickly tell. सर मेरा नाम बोलो. अमरजीत अमरजीत 8. ठीक है, बोल दिया नाम. नाम बोल दिया, अभी आंसर बोलो. नाम तो बोल दिया, अभी कितना होगा? 5/6 ऑफ व्हाट? 5/6 आइसक्रीम है का, आइसक्रीम कोन में है, तो कोन का 5/6 में आइसक्रीम है, तो मतलब 5/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, है कि नहीं? मतलब 5/6 इंटू 36 पाई, ये कैंसिल जाएगा, ये 6 होगा, तो ये हो गया 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सही है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो आइसक्रीम में तो पूरे कोन
पूरे कोन में यहां तक आइसक्रीम, नीचे वाले को रिमूव करके यहाँ पे तो 5/6 कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वहां ऊपर एक हेमिस्फीयर भी तो है, ऊपर में तो भी तो आइसक्रीम है, तो ये हेमिस्फीयर हुआ, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना होगा? दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अभी कोन का और हेमिस्फीयर का जो बेस वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट तो ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप करेगा तो रेडियस सेम होगा, तो कितना होगा ये? सो दिस इज 2/3, पाई को पाई रखने दो, तो दिस इज 3 क्यूब, 3 का एक पावर कैंसिल जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9, तो ये 18 पाई हो जाएगा। तो दिस इज 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम कितना है पूरे कोन में? अभी कितना आइसक्रीम है? एक तो 5/6 इतना आइसक्रीम है और हेमिस्फीयर में इतना आइसक्रीम है, तो टोटल आइसक्रीम कितना हुआ? टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होगा? दिस इज नथिंग बट कोन में कितना आइसक्रीम है? 30 पाई, और हेमिस्फेरिकल पार्ट में, मतलब ऊपर वाला पार्ट में, इस वाले पार्ट में कितना आइसक्रीम है? दैट यू हैव कैलकुलेटेड एज 18 पाई। अभी तुम पाई का वैल्यू डालो, पाई को कॉमन लेंगे तो ये 30 प्लस 18 विच इज 48 पाई। अभी तुम 48 में इसका वैल्यू डाल दो, इधर तो 22/7 डालो या 3.14 डालो, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी द आंसर? क्विकली टेल मी द आंसर। 48 इंटू 22/7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? टेल मी द आंसर, क्विकली टेल मी द आंसर। कितना आएगा भाई? आंसर बोलो। हाउ मच इज द आंसर? मल्टीप्लाई करके क्विकली आंसर बोलो, मल्टीप्लाई एंड क्विकली टेल मी द आंसर। कोई है लाइव? चला गया? शायद कहाँ गए भाई? आंसर बोलो, टेल द आंसर। ओके, कोई तो है नहीं, हम ही लिखेगा आंसर अभी, ठीक है। सो इफ यू सी द आंसर विल बी 150.86 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, दिस हियर इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द एंटायर कोन, है कि नहीं? तो ये है आइसक्रीम, ये इतना आइसक्रीम पूरे कोन में है, नीचे वाले पार्ट को रिमूव करके, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। हेलो ठीक है। तो अभी इसी को कंटिन्यू करना है क्या? एक तुमको हार्डर क्वेश्चन चाहिए क्या? आई शुड कंटिन्यू विद द सैम्पल पेपर। दिस ईयर वी हैव डन दिस क्वेश्चन, डन, ओके। ठीक है, अभी जाएंगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
Okay, so now we'll be doing this where you're told कि तुमको मोड दिया हुआ है, you are given the mode. Now we have to find, हमको ढूंढना है x का वैल्यू. The mode is given to you, you simply have to find the value of x. कैसे ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए? ठीक है. सो इफ यू सी, एक और वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो करेंगे बाद में. सो इफ यू सी हियर, वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे ढूंढना है मोड. वी हैव टू फाइंड द मोड. द मोड ऑफ द, सॉरी, मोड इज ऑलरेडी गिवन टू यू. द मोड इज गिवन टू यू एज दिस. ओके, इन द क्वेश्चन द मोड इज गिवन टू यू एज 55, है कि नहीं? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, x का वैल्यू ढूंढने के लिए हैंस फाइंड द मीन. बाद में मीन भी ढूंढने को दिया है. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मोड. मोड ढूंढने के लिए पहले तुमको चाहिए होगा मॉडल क्लास, है कि नहीं? बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, इन द वेरी फॉर्मूला फॉर मोड यू कैनॉट प्रोसीड अनटिल एंड अनलेस यू फाइंड द मॉडल क्लास. अभी यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होगा? व्हिच वन विल बी द मॉडल क्लास? यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होगा? See, since your क्योंकि तुम्हारा, since the mode itself is 55, since the mode itself is 55, it has to lie in that particular class interval, है कि नहीं? जितना मोड है उसी क्लास इंटरवल में उसको लाई करना पड़ेगा. अभी 55 कहाँ पे लाई कर रहा है? 0 to 15 में नहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे लाई कर रहा है. 55 is lying in this class interval from 45 to 60. 55 is in that class interval only, है कि नहीं? उसी इसके लिए, that is the exact reason why your model class is 45 to 60. तो उस हिसाब से मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा? L का वैल्यू है which is 45. अभी यहाँ पे F1, F0 और F2 का वैल्यू चाहिए होगा, है कि नहीं? F1 किसका वैल्यू था? F1 किसका वैल्यू था? F1 किसका वैल्यू था? F1 किसका वैल्यू था? If you remember, F1 is the value. F1 होता है तुम्हारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी. सो ये होगा 15. F0 होता है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का आगे वाला जो होता है x, और F2 होता है मॉडल क्लास का बाद वाला फ्रीक्वेंसी which is here 10, है कि नहीं? Here this is your F1, this is your F0 and this is your F2. ऐसे ही याद रखना है. F0 F1 F2 के हिसाब से नहीं, तुमको याद रखना है कि F1 होल तुम्हार मॉडल क्लास और फ्रीक्वेंसी. 1 और আগত কোন है 0, 1 और পিছত কোন है 2. So 1 और আগত F1 और আগত फ्रीक्वेंसी F0, F1 और পিছৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো F2, সেইখিনি ঠিক আছে. নাও উইল এপ্লাই, এতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম মোডৰ ফৰ্মুলা. সিম্পল, মোডৰ ফৰ্মুলা কি আছিল? L plus F1 minus F0 divided by twice of F1 minus twice of F1, sorry, twice of F1 minus F0 minus F2 into H. H value also needed. H value किमान? All the class intervals are going at a range of 15. 15 or interval bari bari गई ऐसे. Now here I will apply the formula for mode to find the value. ठीक है सर, to find the value of x. ठीक है सर, ठीक है सर. Here the formula is correct and this is F0 only. Okay, so this becomes, F0 minus F1. So this is 45 plus F1 is our 15,
f0 is our x, twice of f0, twice of f0. How much is twice of f0? Okay, so here I have, here this is, no, I read correctly only, this is f1 and this is f0, so twice of f1 which is 15, which is 30, f0 which is x, and f2 which is 10 into 15. You have to calculate this, you have to calculate this. Okay, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होगा, दिस इज 45 प्लस मोर यू आर ऑलरेडी गिवन एज 55, ये तो ऑलरेडी 55 दिया ही गया है, सो 45, 15 माइनस एक्स, 30 माइनस 10, 20, 20 minus x into 15, 55 will bring, 45 will bring this side, this will be 10, equals to 15 minus x by 20 minus x into 15, 20 will bring this side, so this will be 200 minus 10x equals to 15 into 15, 225 minus 15x, है कि नहीं? इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो 5x, 5x इक्वल्स टू 25 आएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 5. सो दिस हियर इज द वैल्यू ऑफ x. इज इट क्लियर? सो वी हैव सक्सेसफुली फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x. I hope it is clear. Is it clear? Okay, so this here is the value of x, but we are also told to find the value of mean also. Mean you can find for this particular question. For this particular question you can find a mean by the direct method only. यहाँ पे mean calculate हो सकता है by direct method only, meaning fi xi, sigma fi xi by sigma fi, वही से कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी है नहीं. सो यू हैव टू यूज द स्टेप डेविएशन और द एज्यूम मीन मेथड जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो. यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी मॉडरेट लेवल का है, तो इसके लिए इतना प्रॉब्लम है नहीं. यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड. ओके, so here you can apply the direct method. Okay, I will is clear. Okay, Pratyasha clear. Okay, so Pratyasha has understood. So moving on. This here is a case based question. Before moving on to the case based question, I want to complete the mean part of the question also. Okay, I want to complete the mean part of the question. ठीक है. So what were the values given to us? What were the values? So if you see the values that were given to us, let me make the table. Okay, so here we will have class interval. Class interval was given, frequency was given, then we have to find a class mark and the fi xi value. The class intervals are going from 0 to 15, 15 to 30, then 30 to 45, then 45 to 60. Yes, then 45 to 60. We are going till 90. 45 to 60. Okay.
These are the class intervals. So it was going from 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, and 75 to 90. Then the frequency is Fi. Then here we'll have the class mark, and here we'll have Fi, Xi. The frequencies that were given to you. The frequencies that were given to you. What were the frequencies? 10, 7. The frequencies are. Okay, no, so there is a technical glitch here. I'll be moving on to this question only. Okay. Okay. So up till now we have covered pretty basic part of the question paper. So section D, I have discussed some questions. Few questions are left. I will do this in the next part of the video. So I hope everything whatever we have discussed here was helpful for you. Keep studying because next Tuesday बोलो 17 को ही एग्जाम है, इतना टाइम बचा है नहीं. सो पूरा रिवाइज करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो और केस स्टडीज प्रैक्टिस करो. बाकी का अंदर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है. सो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, case studies practice karo. In the next part of the video, I will be discussing MCQs and case CBQs. MCQs, PYQs and CBQs will discuss for your help. Okay. So I hope the video was beneficial for you.